हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ब्रेकआउट स्टॉक की जिसने आज गिरते हुए मार्केट में 20% का अपर सर्किट हिट किया था। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू लाइक दिस वीडियो। अगर बात करें आज की मार्केट की तो आप देख सकते हैं जो निफ्टी 50 का इंडेक्स है वो रफली 41 पॉइंट्स डाउन था। सेंसेक्स वाज रफली 159 पॉइंट्स डाउन और जो मेजर सेल ऑफ था वो था आज के दिन निफ्टी आईटी एंड निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक वाज रफली 111 पॉइंट्स डाउन और निफ्टी आईटी 1.77% विच इज 479 पॉइंट्स डाउन, जिसके वजह से आज के मार्केट में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी भी थी एंड मेजरली मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स पर फॉलिंग ओनली। अगर आप देखेंगे यहाँ पे मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स में आप देख सकते हैं येस बैंक टुडे हाउएवर सस्टेन्ड समहाउ, जहाँ पे अदर स्मॉलर बैंक्स फेल 4 to 5%। येस बैंक आज ओनली 1.20% डाउन था। टाटा स्टील वॉज अप गुड इन द मॉर्निंग, जो 2% अप गया था रफली अराउंड 109, बट इट फेल बैक अगेन टू द लेवल ऑफ 108। नाउ Tata Steel looks good on the charts. I'll tell you, I want to discuss about the Tata Steel as well as Zomato is continuously doing well and taking support at the level of 50. So these were some of the most active stocks which you should keep in radar as well. I believe if Yes Bank sustains the level of 16, or if you find this particular stock at the level of 15 or 16 in between, then definitely you should think about buying Yes Bank as well as Zomato around the level of 50 rupees. जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ इन दिस वीडियो, जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, इट बिलोंग्स टू दी pharma sector, and yesterday only we discussed about the pharma sector doing well and we discussed about the stock named Biocon। और आज इस वीडियो में मैं जिस स्टॉक की बात कर रहा हूँ उसका नाम है Gland Pharma। So yeah, the Gland Pharma, sorry, not Gland Pharma, the Gland Pharma। So Gland Pharma share snaps 3 days fall, jumps 15% today। तो आप सब जानते हैं जो ग्लैंड फार्मा का आईपीओ था वो लास्ट ईयर ही आया था, लास्ट ईयर आया था। आई गॉट अलॉटमेंट इन दिस पर्टिकुलर आईपीओ, हाउएवर ये आईपीओ फुल भी नहीं हुआ था। आई रिमेंबर ये फुली सब्सक्राइब भी नहीं हुआ था। इट वाज रफली 75%, 1600 के बेस प्राइस पे आया था। इट गेव अ गुड प्रीमियम ऑफ 35% ऑन द लिस्टिंग डे। हाउएवर उस टाइम पे जो वेव चल रही थी चाइनीज बैन की, चाइनीज गुड्स बैन की, दिस पर्टिकुलर कंपनी हैड अ मेजर शेयर होल्डिंग कमिंग और द मेजर प्रोमोटर्स कमिंग फ्रॉम चाइना, जिसकी वजह से इसके आईपीओ को भी नेग्लेक्ट किया गया था। करेंटली यू विल सी दैट इट इज ट्रेडिंग बिलो इट्स आईपीओ प्राइस और आज के दिन ही ये स्टॉक 15% अप है। द करेंट मार्केट प्राइस फॉर ग्लैंडमार्क फार्मा वॉज 1417 रुपीज और मार्केट कैप देखे तो इट्स अ मिड कैप स्टॉक विद 23,343 करोड़। Book value is 464, stock PE is 23.8. However, very little debt here you can see of 4.55 crore on this particular stock. इस कंपनी ने अपना हाई बनाया था 3,559 का और लो बनाया है 1,130 का, which is recently 3 days back only. अगर आप बात करें इसके पीयर कंपैरिजन की, आप देख सकते हैं इसके पीयर कंपैरिजन में डीवीज लैब है विच इज ट्रेडिंग एट 36.97, ग्रैन्यूल्स 14.7, जुबिलेंट फार्मो, आरती ड्रग्स एंड एमी ऑर्गेनिक्स। अकॉर्डिंग टू द कंपैरिजन यू कैन सी इट इज ट्रेडिंग एट अ वेरी गुड एंड फेयर प्राइस और फेयर वैल्यू ओनली। Now, the interesting fact comes here. You will see that the company's sales has been growing exponentially in this particular stock. In 2019 इस पर्टिकुलर स्टॉक का सेल था 646 और इन सितंबर 2022 इस पर्टिकुलर स्टॉक ने सेल दिया है 1048 का। एक्सपेंसेस वर इंक्रीजिंग बट अगेन आप देखेंगे the company was able to do well in terms of generating profit, in terms of generating net profit as well। 2019 में ये कंपनी 154 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट कर रही थी और सितंबर 2022 में इन्होंने 240 करोड़ का प्रॉफिट किया, विच वॉज अगेन क्यू ऑन क्यू में भी ज़्यादा था एंड इवन एज वेल वाई ऑन वाई में देर वॉज अ डिप बिकॉज अगेन 2020 में कोविड आया था, जिसकी वजह से फार्मा कंपनीज हैड सीन अ वेरी गुड बूम इन देयर डिमांड। और मेजरली जो ग्लैंड फार्मा है ये इंजेक्टेबल्स में डील करते हैं, जिसकी वजह से दिस कंपनी ऑल्सो सीन अ सर्ज, अ वेरी गुड सर्ज in their sales and revenue। Now talking about their shareholding pattern, आप देखेंगे कि जो promoters का stake है वो 58.36% है,
which was down by 57.86 only. FIIs has been decreasing their stake in this particular stock. The DIs has been somewhat maintaining their particular position in this particular stock, and public is also holding roughly around 14 to 15% in this stock. Now, the major concern जो इस stock में है वो है the company called Fosun Pharma Industrial Pte Limited. Now, मैं Fosun Pharma का आपको background दे दूं. It's a Chinese company which holds a major stake in the Gland Pharma. You can see that it holds the 57.86, जिसके वजह से इसे backlashes मिले थे back when the IPO came. और इवन आज भी मैक्सिमम पीपल बिलीव दैट जो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस है इस पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर, चाइनीज़ प्रमोटर्स का इन्फ्लुएंस है, इट कैन बी वेरी नेगेटिव फॉर द कंपनी, जिसके वजह से ये स्टॉक काफ़ी गिरता हुआ भी दिखाई दिया. अगर मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक की ही बात करूं तो आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक में हाउएवर डेट की वैल्यू ओनली 4 करोड़ रुपीस दिखाई गई है. बट जो इनके प्रमोटर है फोसन फार्मा, दे आर into huge debt, and there are various claims that even Chinese companies or Chinese bank has consolidated them, or they have said multiple things on the multiple reports that they have to pay more collateral in order to keep their loan in the market. Now, अगर मैं ग्लैंड फार्मा का आपको चार्ट दिखाता हूं तो you can see we did this thing, and हमने इसके सपोर्ट लेवल्स एंड रेजिस्टेंस लेवल बना रखे थे. अगेन अगर आप देखेंगे तो देयर इज अ वेरी गुड सपोर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक एट द लेवल ऑफ 1180 to 1200 रुपीज. यस, अगर ये स्टॉक आपको 1180 to 1200 के आसपास मिलता है, डेफिनेटली यू कैन थिंक अबाउट बाइंग और लाइक एवरेजिंग दिस पर्टिकुलर स्टॉक. और आज मैंने इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री की थी 1310 के ऊपर, बिकॉज दैट वॉज वेयर आई वॉज सीइंग रेजिस्टेंस. ओके, 1310 was the resistance for this particular stock. However, I didn't made an early entry in this particular stock in the morning, which was when the stock was roughly at 1232. It opened at 1235. और मैंने इसमें एंट्री ली आफ्टर 100 points of run up. Again, it gave me a good decent amount of return. It went up till the level of 1475 in a single day, which was 20% up from the opening. Now, the stock has given a good breakout here. अगर आप देखिए तो ये पिछले कई दिनों से एक ही पर्टिकुलर चैनल में ट्रेड कर रहा था, और अब अगर ये स्टॉक इस लेवल को सस्टेन करता है विच इज़ 1350, देयर आर हाई चांसेस कि ये स्टॉक रिटेन कर सकता है 1600 के लेवल्स को भी. इमीडिएटली इट विल फेस अ रेजिस्टेंस एट अ लेवल ऑफ 1500. अगर 1500 हम ब्रेक करके सस्टेन कर देते हैं एक या दो दिन, देन वी कैन थिंक अबाउट touching the target of 1600 in short term period, and further we can think about touching the target of 1900 also in coming year. So this is what like my prediction or my research says. Okay, there I want to give you a disclaimer that this is only educational purpose video, right? This is not any kind of recommendation. This particular stock gave a very beautiful breakout, and I had placed the GTD orders for this particular stock. Even my alarms or like my trackers gave me a very good and strong signals on this particular stock on the breaking the level of 1310. And you can think about like what could happen in this particular stock. This stock gave a rally, one, because it became very oversold on the technical chart. It became oversold as such. It was roughly trading at a RSI of below 30, right? So this is a dead cat bounce also, you can consider it, because it is oversold, then hence why the people bought it and it gave a good run up. Otherwise, what you can do is you can, if you are planning to invest in this particular company, you can put a strict stop loss of 1350. If it sustains the level of 1350 in coming days, then definitely you can see a good run up in this particular stock as well. 1350 का अगर आप इस पे stop loss देते हैं, most likely this particular stock might go up and down from here a little, and then definitely if it breaks the level of 1475 in coming days, you will see this particular stock touching the level of 1600 as well. So this is all about Gland Pharma and why I believe that this particular stock can do well, because they have been doing and maintaining exceptionally well in their sales, and they are into such segment where even the barrier of entry for their competitors is very, very high. They are into manufacturing and getting revenue from the injectables, and they hold the 95% of revenue coming from this particular sector only. So they are kind of a monopoly kind of company, or they have hold a major ground in this particular complex injectables
sector. So definitely you should keep an eye on this particular stock. And if you like my analysis on this video, please make sure to hit the like button and do subscribe to my channel. That's it for today. Thank you.